तो कैसे हैं हमारे नए और पुराने दोस्तों, सभी वीडियो देखने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। यानी कि भाई हम आपसे कह कर थक चुके हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे भाई, हमें ही बता दो कमेंट में लिखकर। लो अभी यार इन्हों की भी सुनो। हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर किया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे वो पहले जाएंगे। ये किससे कहा था आपसे? इंडियन एम्बेसी ने? इंडियन एम्बेसी ने तो खैर बहुत गलत किया। अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे? नहीं, जो पहले उन्होंने बोला उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। वॉलंटियर्स टू वॉश, किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते। तो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसको नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था, वहाँ आया है तो कहाँ आएगा। लेकिन दोस्तों हमारे मोदी जी अब भी जो है डमरू ही बजा रहे हैं, सुनिए। तुम हमसे गम की उम्मीद कर रहे हो? हमसे पाकिस्तान के बच्चे जिनके साथ हम भी बैठे हैं, हम सारे इंडियन हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं, देख सकते हैं। कल खारकिव से लिविव पहुंचने के बाद इतनी भीड़ थी, कोई नहीं था इंडियन एम्बेसी का। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ज़्यादा ढूंढा, कोई भी नहीं था। लेकिन दोस्तों ऐसी व्यवस्था में भी जब पाकिस्तानी हमारे साथ आ रहे हैं, जब भी जो है मोदी जी जो है अपना जो है रैलियां कर रहे हैं, दोनों की रैली भी देखिए आप। और वहीं दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान से है, जहां पर आप देख सकते हैं जागरण भारत का अखबार है जिसने लिखा था, और ये इसका जो है लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि आतंकियों को पालने पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ खबर है। आप जो है जो दुबई है, यूएई है, जो यूएई देश है, उसे भी ग्रे लिस्ट कर दिया गया है, और पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में ही डाला रहने दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो है अमेरिका की बहुत बड़ी साजिश है, जिसे बताया जा रहा है कि जो है अब अपने फ़ायदे के लिए जो है इसे शुरू कर दिया गया है। जैसा कि हमारे यहाँ पर कहावत कही जा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो इसी तरीके से जो है अभी देश कह रहे हैं कि अपना काम बनना चाहिए, दूसरा चाहे देश कुएं में कूदे या कुदाए या मार दे, कुछ भी हो जाए। आज 80 रुपये पर यूनिट उसे हम बिजली दे रहे हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बोले तो बोले क्या? ये वीडियो तो आपने देखी होगी। और दोस्तों वहीं अगली खबर आयरिश से है, जिसे आयरलैंड कहा जाता है। उनके जो एक लीडर है, उन्होंने कहा है कि जो ये इसराइल है ये फ़िलिस्तीन पर इतना जुल्म करता है, लेकिन उन्हें जो है कुछ सज़ा नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पर जो है आम आदमी अपनी जो है वो यूक्रेन में जो कहा जा रहा है कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो फ़िलिस्तीनी लड़ते हैं उन्हें जो है आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, और इन्हें जो है बहुत तरीके से इन्हें मारा जाता है, जेलों में मार दिया जाता है, लेकिन इन पर कोई नहीं बोलता। आप उनका ये बयान सुनिए। The crimes against humanity that are being committed by Vladimir Putin in Ukraine. And the government has moved instantly, within 5 days, to sanction Putin's regime and take urgent action. And the strength of language that was used, rightly, against Putin as a barbarian, as a thug, as a murderer, as a warmonger, all of which are true, all of those things
applied to the state of Israel in its treatment of the Palestinians, and yet the government is concerned about its use of language and doesn't feel it is appropriate to even use the word apartheid when Amnesty International, the most respected human rights organisation in the world, and Human Rights Watch, within a very short period of time, issue these damning reports saying that Israel, since its foundation, has been built on a system of oppression and domination and apartheid and racism, involving the murder of unarmed, innocent civilians on a regular basis, arbitrary detention and imprisonment, land annexations, the displacement of people, the denial of basic fundamental rights to 6 million Palestinians who are displaced outside Israel and the occupied territories, to the right to their return to their homes, to the illegal blockade of Gaza, which has left, as they say in the report, Gaza in a permanent state of humanitarian crisis, denying people access to food, to water, and treating the Arab population as a whole, the Palestinian population as a whole, as an inferior race. I mean, it doesn't get stronger than this. And yet you want to be careful about your language. You're happy to correctly use the most strong and robust language to describe the crimes against humanity of Vladimir Putin, but you will not use the same strength of language when it comes to describing Israel's treatment of the Palestinians, when it is now being documented and detailed by two of the most respected human rights organisations in the world, and indeed has been alleged by dozens and dozens of non-governmental organisations, and to be honest, anybody who looks honestly at the decades of brutal, inhumane persecution of the Palestinians, successive assaults on Gaza, the annexation of their land and territory, the systematic application of apartheid rules, Gaza, the annexation of their land and territory, the systematic application of apartheid rules, you don't want to even use the word apartheid. Never mind sanctions. 5-day sanctions against Putin and his thugs, 70 years of oppression by the Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? It wouldn't be helpful to impose sanctions. Amnesty International are calling for Israel to be referred to the International Criminal Court for crimes against humanity. Will you support it? They are calling for targeted sanctions against Israeli officials who are perpetuating the system of apartheid. Amnesty International are calling for Israel to be referred to the International Criminal Court for crimes against humanity. Will you support it? They are calling for targeted sanctions against Israeli officials who are perpetuating the system of apartheid. Just exactly the same types of sanctions you've just initiated against Vladimir Putin. Will you support it? And I think the answer is clearly you're not going to. And then we ask the question, why? Why? With such strength of feeling, Fine Gael and Fianna Fáil and Green TD stood up one after the other, saying it was intolerable, the thuggery and the warmongering and the brutality of Putin. You wouldn't stand for it. Urgent action had to be taken. But we've got to be much more careful with the Palestinians and their treatment. And I haven't even got time to the briefing I organised this week about the people of Yemen and how Saudi Arabia, the most despotic regime in the world, armed to the teeth by the United States, Britain, France and others, killing 337,000 people in Yemen in the last 5 years, 10,000 children. Any action against the United States for arming them? Or Britain, or France, or Saudi itself? No. No action, no sanctions, no outrage, words of concern. We'll raise. और दोस्तों लास्ट न्यूज़ जो है ये पाकिस्तान से ही है। जो ये इमामुल हक है, जो इन्होंने क्रिकेटर है, इन्होंने फर्स्ट डे में ही जो है सेंचुरी मार दी है। जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में जो है टेस्ट मैच चल रहे हैं रावलपिंडी में।